Like and subscribe Masters Mind Education channel. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर्स माइंड एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टॉपिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मैं आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा सीएफटी क्या होता है। स्टूडेंट्स, CFT is breaking of degenerated electron orbits of d or f due to static electric field। ये बेसिकली होता है कि ब्रेकिंग ऑफ d और f ब्लॉक के जो ऑर्बिटल हैं उनको ब्रेक करना ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा नॉट। मैं और इजी लैंग्वेज में इसको बताता हूं। इट इज डिफरेंस in energy of d orbitals due to electric field of ligands। Delta naught increase with increase in oxidation number। means higher the oxidation number, higher will be delta naught। ये डेल्टा नॉट गैप होता है लाइक दिस, दीज आर डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट किया हुआ। ये जो गैप है, इस गैप को हम डेल्टा नॉट बोलते हैं। डेल्टा नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ वी विल डिस्कस फैक्टर ऑफ सीएफटीज। फर्स्ट फैक्टर इज कोऑर्डिनेशन, geometry। second is nature of ligand। third is number of ligands around metal ions। These are the three main contributing factors for CFT। Students, please remember one thing, जो stronger field ligands होते हैं उनकी splitting भी ज्यादा होती है। weaker field ligands की splitting weak होती है, stronger field ligands की splitting ज्यादा होती है। This is the splitting। जो stronger field है उसकी splitting ज्यादा होगी, weak field ligands की splitting कम होगी। Students, please remember all halogens and water are weak field ligands, while rest of other are stronger फील्ड लाइगेंड्स। सिर्फ हेलोजेंस एंड वाटर हैं जो वो वीक फील्ड लाइगेंड है, बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। रिमेंबर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स। इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, रिमेंबर पॉइंट्स: low spin, high energy, that is delta। third, pairing take place। in weak field ligands, all the points are reversed: high spin, low energy, third is no pairing। All the points are reversed। Weak field ligands are halogen and water। Students, I will place a slide for limitations of CFT। Now let us solve a problem
complex is given FeCN6, ion is -3. First of all, find the oxidation number for Fe. X plus oxidation state of Cn will be -1 into 6 equals to -3. X -6 equals to -3. X equals to -3. Oxidation state of Fe is -3. Now, according to Abbas principle, that is d orbital 4s2 3d6. Fe has atomic number of 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In excited state of 3, Fe loses 3 electrons. 2 from s orbital, 1 from d orbital. It comes out to be 3d5. In CFT, octahedral geometry, make 3 circles at the bottom, 2 circles at the top. As you know, Cn is strong field ligand, so the gap between them will be higher. Delta naught will be higher. Strong field ligand pairing take place. Place the 5 electrons 1, 2, 3, 4, 5. आपने ऊपर नहीं इलेक्ट्रॉन्स डालने, नीचे ही इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल करना है. नेम इट T2G5. T2G5. Eg में 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है Eg स्टेट पर, इसलिए 0. T2G स्टेट पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन T2G5 लिख दी. This is how we make a octahedral geometry for any complex in CFT. Let us take another example. Students, I have taken another example. The complex is given Fe bracket water 6 molecules positive 3 ion. So first of all, find the oxidation state of Fe. X plus oxidation state of water is 0 into 6 equals to 3. It comes out to be 3. Oxidation state of iron in this case is 3. So Fe according to Abbas principle 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1 in 2 in 4s2 3d6. After losing 3 electrons, as I told you earlier also, 2 electrons from s will be lost and 1 from d orbital will be lost. Now water is weak field ligand. So pairing will take place. These are upper loops, these are lower. Now the gap is less in weak field ligands. 5 electrons are present in d orbital. Now there is no pairing. There will be no pairing. 1, 2, 3, go up 4, 5. Now electronic configuration is T2G3 Eg2. So this is how to solve problems related to strong field ligands and weak field ligands. Students, I hope I have made you all the concepts clear regarding crystal field splitting. I have taken both the examples for strong field ligand as well as weak field ligands. You can watch my videos for VBT in my channel also. I will put the link of VBT in the description box also. Thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel, Masters Mind Education. Thank you.